हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो ऑलरेडी हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ एंड शेड्यूल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसके फर्स्ट लेक्चर में 2023 से 2007 तक डिस्कस कर चुके हैं और 2007 का कुछ बचा हुआ है, उसे स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट फिक्स द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर and the state must not be exceeded 50% of the total number of members in the Lok Sabha and the total number of members in Legislative Assembly of the state representative. We already discussed this. That is 91st Amendment Act. जो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट 93 Amendment Act talk about the enable the provision of reservation 27% of other backward classes, OBC and government as well as private education institution. 95th Amendment Act talk about ST SC को SC ST एंड एंग्लो इंडियन को लोकसभा में स्टेट असेंबली फ्रॉम 60 ईयर्स टू 70 ईयर 60 साल और 70 साल के लिए लोकसभा में ST SC प्लस एंग्लो इंडियन को सीट मिलेगा, जो ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका है. दिस इज नॉट इन रिजोल्यूशन, अब डिजोल्व हो चुका है. एंग्लो इंडियन का पोस्ट हट चुका है रिजर्वेशन सीट. 97 अमेंडमेंट एक्ट टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी after the word union of the article 19 clause 1 sub clause C inserted the article 43b, that is promotion of cooperative society, added the 9b, that is the cooperative society. 2006 का देखते हैं. which of the following subject is under the union list and the 7th schedule of the Constitution of India? Regulation of law, regulation of labor and safety in the mines and oil field, agriculture, fisheries, public health. That is A. Regulation of labor and safety in mines and other fields. Schedule 7 talk about Schedule 7 under Article 246 of the Constitution deal with the division of power between union and the state. It contains three lists: union list, state list, and concurrent list. Union list talk about the subject on which parliament may make law. State subject contains the subject on which the state legislature make law. Concurrent list दोनों मतलब स्टेट भी और सेंटर भी लॉ बना सकता है, बस स्टेट सेंटर भी प्रिवेल्स द स्टेट लॉ. सेंटर लॉ अगर बनाएगा तो उसमें स्टेट लॉ को प्रिवेल्स कर देगा. The residuary power subject is given to the center. Residuary subject is center को regulation of the labor and safety on mines and oil field is included in the union list. Agriculture, fishery and public health are included in the state list. Next question 2004. Which of the following statement is correct? Describe the fourth schedule of the Constitution of India. Fourth schedule talk about seat of council of state. ये allotted the seat of council of state. शेड्यूल के बारे में अगर फर्स्ट शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ इन राज. फोर्थ शेड्यूल टॉक अबाउट फर्स्ट शेड्यूल इंडिया एंड इट्स टेरिटरी. फर्स्ट शेड्यूल ये बात करता है. फोर्थ शेड्यूल talk about allocation of seat in Rajya Sabha. Seventh schedule talk about the power of distribution between state and union, and eighth schedule talk about language, and sixth schedule talk about administration of travel area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Next 2023 question. Which of the following schedule of India is contained the list? Indian Constitution lists the name of state in specific their territory on the first schedule. Already we have to talk about first schedule name and its union territory. First schedule name and its union territory, Article 1 to 4. Second schedule emolument allowances privilege for so on the President of India, Governor or Speaker and Deputy Speaker, Chairman, Deputy Chairman, Speaker, Deputy Speaker, Chairman, Deputy Chairman. Talk about under Article 59, 65, 75, 90, 97, 125, Article 148, 158, 164, 186, 221. Third, we will talk about the oath and affirmation in Article 75, 80, 75, 84, 99,
124, 146, 173, 188, 219. Fourth schedule. Seat in the Rajya Sabha and the State of Union Territory, Article 4 to 80. Fifth schedule talk about the administration and control of scheduled area and scheduled tribes, Article 244. Sixth schedule talk about the Mizoram, Manipur, Tripura and Assam, Article 244 and 275. Seventh schedule talk about the union list, state list and concurrent list, 246. Eighth schedule talk about the 240, 344 and 351. Ninth schedule talk about 31B. 10 schedule talk about anti-defection law, that is Article 102 and 191. 11 schedule talk about Panchayati Raj, and that is 243G. And 12 schedule talk about municipality, that is 243W. The in 9th schedule of Indian Constitution was added by the ninth schedule, First Amendment Act. We already discussed First Amendment. Ninth schedule added the Constitution First Amendment Act 1951. It contains list of certain state law under which cannot be charged in the court. Its purpose was to protect the law reject to the agrarian form, to abolishing the zamindari system from the judicial scrutiny. 284 such laws included in 9th schedule. In Kyoto Halon case, IR Kyoto case में, and this could be there could be not be any blanket immunity for judicial review of law, including the 9th schedule. IR Kyoto केस में जो भी ब्लैंकेट था 9th schedule के अंदर वो रिमूव कर दिया गया. 2001 का क्वेश्चन, if the new state of Indian Union and to be created, which of the following schedule of the constitution must be amended? अगर यूनियन को एक नया स्टेट को क्रिएट करना है तो कौन सा शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा? दैट इज फर्स्ट शेड्यूल. इट इज टॉक अबाउट इट्स यूनियन एंड स्टेटरी. First schedule deal with state and territorial jurisdiction, name of union territory and this action. Article 3 deal with the parliament to the new state, to separating or uniting two or more states in the part of a state, increasing and diminishing or alter the area of the name of any state. The power is subjected to two conditions. Such a bill can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president, and president has to refer the bill in state legislature to expressing its view before it introduced in parliament. Parliament is not bound to view the state legislature. It is not necessary to make fresh reference of state legislature even time the amendment of India. India is an indestructible union of districtable state. Next is 1998 question. Which of the following schedule of the Constitution of India provide provision regarding the anti-defection law? That is 10th schedule. 52nd Amendment Act 1985 से 10th schedule को लाया गया था. And 10th schedule deal with the allowance and management of these dignities which are charged by the public office. Second schedule deal with fifth schedule deal with schedules area and scheduled tribes, and eighth schedule deal with official language. Which of the following schedules of the Constitution of India contain provision regarding the anti-defection law? We already discussed. Repeated question. That is 10th schedule. Next, President of India. Talk about faith and elegance. Judge of Supreme Court talk about upholding the Constitution and its law. Members of Parliament of the Constitution of India secure the members of Constitution of India faith discharged on the court duty. That is SIGA 2. Faithful discharge of court duty. Minister of Union functions about oath and affirmation, the secrecy of information. Oath and affirmation by the President under Article 60. Oath and affirmation of the Judge of Supreme Court, members of Parliament, Ministry of Union come under the third schedule of the Constitution. It is a political party of 36 members. The minimum number of the members need to be split about disqualification
द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी, कितना है, the 10th schedule of the Indian Constitution called Anti-Defection Act 91st Amendment Act 2003 deal with the provision of 10th schedule penaltying the examination from the disqualification of case in dispute of one-third of the members of legislative party. It means defection is no more protection on ground of split. 95. The seventh schedule of the Indian Constitution contain union list, state list, and concurrent list. We already discussed union list. Next question. Which of the following languages included in eighth schedule of the Indian Constitution? That is Sindhi and Kashmiri. क्योंकि इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश कट गया, ऑफिशियल लैंग्वेज. कोंकणी इज नॉट एडेड, सो सिंधी इज एडेड दिस टाइम. अभी कोंकणी पहले से एडेड है, लेकिन इस शेड्यूल में अब एडेड है, लेकिन पहले नहीं था. The eighth schedule of the constitution contain 22 लैंग्वेज. हम लोग 22 लैंग्वेज देखते हैं कौन कौन सा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी रिपीटेड है ये क्वेश्चन, तो रिपीट कर सकता है कि कौन लैंग्वेज है या नहीं है. असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोंगरी. These are 22 language. Sindhi language was added in 21st Amendment Act 1967. Next is the 8th schedule of the Indian Constitution contain. 8th schedule कौन सा contain करता है? 22 language. We already discussed 22 language contain करता है. Sindhi was added in 21st Amendment Act. And then Konkani, Manipuri and Nepali was added in 71st Amendment Act. And Bodo, Dongri, Maithili, Santhali was added in 92nd Amendment Act 2003, which come into force in 2004. And Act and Regulation validated the Article 31B, which is specialized in the Dutch Constitution. That is नाइन्थ शेड्यूल में आर्ट एंड रेगुलेशन जो कि फंडामेंटल राइट पर 31B टॉक करता है एक्ट एंड रेगुलेशन के बारे में, वही सेम टू सेम वो शेड्यूल वो 9th शेड्यूल में भी टॉक अबाउट के आर्ट एक्ट एंड रेगुलेशन वैलिडेटेड अंडर आर्टिकल 31B ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Article 31B state that none of this act and regulation mentioned in 9th schedule of the Constitution shall be considered to be void on the ground of any of inconsistent with any right mentioned in Part 3 of the Constitution. We already discussed 7th schedule, इसलिए यहाँ पर 7th schedule डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं, मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ऑलरेडी डिस्कस. Next is which language has been added in recently 8th schedule of the Constitution of India? That is Sindhi. We already discussed. Sindhi language added in 21st Amendment. उस समय जब 1979 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, उस समय का बात कर रहा हूँ. अभी तो 92 अमेंडमेंट से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003. बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली वाज एडेड एंड केम इन फोर्स इन 2004. अभी टोटल 22 लैंग्वेज है. और कौन कौन सा लैंग्वेज है? असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोंगरी. दैट इज 22 लैंग्वेज. ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है. ऑल ये है था आज शेड्यूल एंड एंटी डिफेक्शन लॉ. ये टोटल खत्म हो चुका है. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ टू, मतलब कि ये नोट्स अब मैं बना चुका हूँ. आप इसका एक स्मॉल शॉर्ट नोट्स आप इस लेक्चर को देख के अपना एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. एंड इससे ये डिफाइन होता है कि शेड्यूल प्लस एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, एंड शेड्यूल एंड एंटी डिफेक्शन लॉ कितना इंपॉर्टेंट है. वी ऑलरेडी डिस्कस कि हम लोग का इससे कितना क्वेश्चन है, मतलब कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेड्यूल. इसलिए सो शेड्यूल्स आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 12 शेड्यूल तक, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया एंड कौन सा अमेंडमेंट है. और लैंग्वेज मेनी क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड बाय लैंग्वेज, की लैंग्वेज में कौन सा
लैंग्वेज को अभी ऐड किया गया है या कब ऐड किया गया, अब कब ऐड किया गया और कितना लैंग्वेज और किस शेड्यूल में आता है लैंग्वेज, ये ऑलरेडी कितना बार आ चुका है, मतलब दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज पीवाईक्यू एनालिसिस। एंड इसी से आप एलिमिनेशन टेक्निक प्लस पीवाईक्यू में मास्टरी कर सकते हैं कि आपको एग्जाम टाइम में कितना लिमिट पढ़ना है, दैट इज डिफाइंड। सो नेक्स्ट लेक्चर विल कवर नेक्स्ट लेवल वी कवर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंप्लीट करेंगे 2023 से लेकर 1999 1978 तक का क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 20 35 45 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं।